that time of the year when the sky turns grey in Delhi and there is that choking feeling in everyone's throats as the air quality worsens. And every year, fingers are pointed to neighbouring states for their inability to control stubble burning incidents. One of these states is Punjab, a land steeped in culture, heritage, and with a deep-rooted history of farming. Agriculture isn't just an occupation here, it's a way of life. As the winter approaches, a haze descends over entire northern India. Stubble burning, a common practice that farmers are involved in, is not a regional issue anymore. It is choking Punjab, Delhi, and in fact entire northern India. Governments have several claims, but farmers say that they have no alternative. Who is responsible and what is the solution? Let's find out. Even before most farmers have initiated their harvest, Punjab is already witnessing a surge in farm fires. The state administration has responded by slapping FIRs and fines, but farmers say this is hardly a solution. Government should provide us with rupees 200 per quintal as compensation for dispensing stubble. We will not burn this stubble then. We burn it out of our compulsion. Poor farmers cannot afford to spend so much money on dispensing it. Farmers are being offered an option that involves collecting paddy straw and sending it to processing units and farms for treatment, ultimately transforming it into an alternative fuel. But farmers say they don't have the money for such expenses. जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं कि क्या विकल्प है हमारे पास, तो सरकार कहती है जी हमने 3 विकल्प दिए हैं। एक तो कि ज़मीन में मिला दो जी पराली, मशीन दे रखी है ज़मीन में मिला दो। दूसरा है कि जी इकट्ठा करके यूनिट्स पे दे दो जो यूनिट्स खोल रखे हैं। और तीसरा है कि क्रॉप पैटर्न बदलो। इनमें से कोई तरीका है जो आपको लगता है काम का है? हमारे पास कोई तरीका नहीं है। जो मशीन वाला बोलता है बेचारा बोल। We do not have any option. If we wait for the machines, this straw will get laden with insects. Then we will need to spray insecticides, which again adds to our costs. This has become a loss-making job. तमाम जो राजनीति होती है कि प्रदूषण इससे हो रहा है, पहली बात तो क्या कुछ लोगों का मानना है इससे प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको लगता है? और अगर हो रहा है तो कैसे फिर निजात मिलेगी? नहीं, निजात इससे मिलेगी कि अगर सरकार मशीनरी अपने लेवल पे दे। वो किसान को बोलती है कि आप खरीदो, हाँ, सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी नहीं मिलती है। वो तो ऐसी है कि जैसे सुपर सीडर का रेट 1,40,000 है, हाँ, और सरकार से आप सब्सिडी लेंगे 2,40,000 का पड़ेगा, हाँ, तो लाख रुपए तो वैसे ही एक्स्ट्रा लगा दिए उन्होंने, तो वही लाख रुपया फिर किसान को वापस दे देते हैं। वो सब्सिडी नहीं ना हुई वो तो। ठीक है, लेकिन फिर इस समस्या का समाधान क्या है? इस समाधान ये है कि 300 एकड़ पे किसान को खुद सरकारी मशीनरी दी जाए। अच्छा, वो अपने लेवल पे उठा के लेके जाए, जहाँ इस पे कुछ पेमेंट दें सरकार को, जहाँ जो उससे खर्चा करके इकट्ठा करके ले जाए। जहाँ फिर इसके जैसे किसान है उसको ट्रैक्टर पे सब्सिडी दी जाए, वो अच्छा ट्रैक्टर ले, डीजल पे सब्सिडी दी जाए, ताकि किसान के ऊपर बोझ ना पड़े और इसका हल हो सके। प्रदूषण तो हम हो रहा है, हमारे बच्चों हो रहा है। We are the ones suffering the most from pollution. Our children are suffering. We also don't want to spoil environment, but do it out of compulsion. Another solution that has been presented is in situ management, which involves ploughing back the stubble into the ground. But this is also a costly technique for farmers, and moreover, it affects their crops. क्या आपको लगता है कि जितने भी सरकार ने समाधान सुझाए हैं, ये तीनों ऑन साइट हुआ, ऑफ साइट हुआ, फिर ये भी बोलती है कि फसल का अगर पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे, जैसे मुझे सुनने में आया कि पिछले साल बीज दिए भी गए थे कि थोड़ा पैटर्न चेंज करो तो हो जाएगा, आपको लगता है इनमें से कोई समाधान नहीं है? अभी तक तो सर कोई दिखा नहीं है कि आप भी बताइए मेरे को, हम लोगों को कौन सा सर अच्छा लगता है? सबसे पहले हमारा यहाँ का एनवायरनमेंट ही खत्म होता है। हाँ। हमारा घर है अगल बगल में, देखिए कितना धुआं उड़ता है, सब कुछ होता है। हमारा मन करता है सर कि हम ऐसे ऐसे काम करें। अगर सरकार हमको विकल्प दे रही है तो ऑप्शन लेने में हमारा क्या जा रहा है?
अगर वो अच्छे से हमको आके बताएंगे ये इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे करो, ये बीज हैं, नई तरह के बीज उगाओ आप, सर हमारा कौन सा मन नहीं करता, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है। ये बड़ा जोर दिया जाता है कि जब ऑन साइट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हो सकता है तो जलाना क्यों जरूरी है, उस गला के और मिट्टी में क्यों नहीं मिला सकते? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। To mix the straw back in the land, we need heavy equipments. Small and medium scale farmers cannot afford it. Getting the equipment on rent is also a costly affair. But some farmers bought the equipment on rent and plowed it back in ground, resulting in straw getting affected by insects and worms and ending spending more on insecticides. गवर्नमेंट बोल रही है कि अलग बीज बीजो, लेकिन उसका रेट फिक्स The government says to use different variety of seeds, but MSP of that crop is not fixed. We have only this option, and hence due to this our kids are going abroad. कम से कम अभी एक ऑप्शन तो हमारे पास है कि गेहूं है या धान है, इनका एक रेट फिक्स तो है हमारे पास। अगर वो दूसरी किसी भी सीड्स के ऊपर आते हैं कि हम लोग ये देते हैं लगाने के लिए आपको, लेकिन उसका कुछ फिक्स नहीं है सर। While most of the stubble burning incidents so far have been witnessed in Amritsar, the sentiment of farmers is the same in Bhatinda and Patiala too. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। There is no solutions for this. The machines are very costly and farmers cannot afford it. Also, these require powerful tractor to operate and we do not have such powerful tractors. Also, the machines too are not of good quality. ये कह रहे हैं कि सरकार की जो भी प्लानिंग है वो सिर्फ मीडिया तक सीमित है, प्रचार तक सीमित है, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। Nothing is happening on ground level. Government keeps saying that we are doing this, doing that, but poor farmers get nothing. Earlier in October, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann announced that the state will ban the cultivation of the Pusa 44 paddy variety from next year onwards. At one point, this variety covered 70 to 80% of the state's total area under paddy cultivation. With Pusa 44 going off the table, farmers want an alternative. पूसा 44 की बात करते हैं और बोलते हैं कि पूसा 44 जहाँ होता है वहाँ पे किसान को कम समय मिलता है दूसरी फसल के लिए और इसलिए उसके पास पराली जलाने के अलावा और कोई समाधान नहीं होता है। पूसा 44 सरकार कह रही है अगले साल से बिल्कुल बंद ही कर रहे हैं। ਪੂਸਾ 44 ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। There's no problem in banning Pusa 44. It's just it yields more and good returns and there is no other issue. The 1509 variety of basmati rice is also good, but MSP is not fixed for it. मतलब आप कह रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है दूसरे बीज से भी क्योंकि इसमें सिर्फ पैदावार ज़्यादा अच्छी हो जाती है, पैसे ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, इसलिए वैसे कोई समस्या नहीं है किसानों को। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1509 We sow Pusa 44 because it is beneficial for us. It gets ready fast and produces straw for our animals too. ਚਾਹੇ ਊਸ਼ਾ 44 ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਪੜੇਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ Whether it is Pusa 44 or any other variety, we will have to burn the stubble. ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇਹ। कहते हैं कि पूसा 44 अगले साल से बिल्कुल बैन हो जाएगा। हालांकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो लोगों ने लगा ही नहीं रखा है, बहुत कम लोगों ने लगा रखा है, लेकिन लेकिन पूसा 44 की जहाँ तक बात होती है तो एक जो फ़ायदा किसानों को पूसा 44 में दिखता है वो है कि पैदावार ज़्यादा होती है तो थोड़ा पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, है ना? नहीं, हमारे इधर फूसा 44 नहीं है, लेकिन फूसा 44 जो आप We sow Pusa 44 because it is beneficial for us. It gets ready fast and produces straw for our animals too. While farmers are demanding answers, Punjab's agriculture minister is lauding his government's efforts in tackling stubble burning. ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Year after year, there is reduction in the pollution. We are using a lot of modern machines to get rid of stubble along with other chemical solutions. Some farmers do create problems. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਲਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਏ ਗਏ। Like in Amritsar, as they have to sow peas, otherwise everything is under control. We are using machines like balers and have given subsidies worth 350 crores. Selling the stubble as hay for animals also.
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਲਈ ਕਾਹਲ ਕਰਦੇ ਆ। Farmers are not just involved in this practice, but they are defending themselves, saying that they don't have any alternate. And as far as the sowing is concerned, so time is very near and they cannot afford waiting for days or even months that, in fact, experts in some cases suggest. This is an area that is recording a number of incidents on a daily basis. In fact, when we had a word with Agriculture Minister of Punjab, he says that we are getting reduced numbers this time. But the fact is that districts like Amritsar, Taran and Patiala are recording fire incidents. And this is one major issue also because the regions that are going to be affected includes the national capital Delhi. We see that how graded response action plan has been implemented in the national capital, given the fact that air quality index in the many areas is going beyond 200. But as of now, this is the practice that is going to affect the pollution levels in northern India. Even when there are a number of claims are of there is an available option as per the government of changing the crop pattern. However, in all these three options, farmers say that they are in loss, and that is the reason why this is the cheap and very easy available option for them. According to Punjab government data, starting from 2017, the Kharif season that ended on November 30th, 2020 had seen the maximum number of fire incidents at more than 76,000, following which there has been a drop. But experts say farmers haven't found a permanent solution, and this year can tell a different story. While the National Capital Region braces for an air emergency due to stubble burning, the Punjab government has already washed their hands off. अभी मौजूदा समय में अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, बीजेपी हुई या कांग्रेस भी हुई, वो लगातार ये कहती हैं कि राजधानी दिल्ली में अगर प्रदूषण की समस्या है तो उसकी जड़ जो है वो पराली ही है, और पराली के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्योंकि सरकार में आप हैं। तो इधर से दिल्ली 350 किलोमीटर है। Delhi is 350 kilometers away from here. There is Haryana also in between. They're not complaining, but Delhi is just blaming Punjab for no reason. There are other reasons for pollution. Our pollution is not going to Delhi. The remark has given fodder to the opposition Congress to target the Aam Aadmi Party, which is in power in both Delhi and Punjab. I had a word with Agriculture Minister of Punjab, and he says that we'll take care of our pollution, but our pollution doesn't go to Delhi or Haryana, and they, without any reason, blame us. One of the most absurd answers given by Agriculture Minister. What is he trying to tell us? That these winds are taking our pollution to Pakistan instead of going towards Delhi? Always these winds from Punjab, they always take these winds towards Delhi. It's already a scientifically proved thing that all these winds, even Pakistan, wherever, even that very wind is also coming towards us. Yeah. So he feels that the straw which is being burnt here will not affect anybody else. If he says it remains only in Punjab, it's even more dangerous, this statement of his. Because that means our own children are the ones who are the biggest sufferers. I think so. This is something, he's a new minister. I wish him well. But he must also have a complete study of his subject. I think so. He's new. He doesn't know his subject well. So that's why this is a totally immature-ish and a childish statement which he's given to you. Problems and politics go hand in hand. But when it is about solution, so efforts are being made in that direction too. After the break, when we'll come back, we'll try to show you the actual condition on ground as to how units have been set up to get rid of a stubble burning problem and how these units are aspiring to make Punjab and in fact entire northern India pollution free.
Stubble burning is an issue that requires immediate attention, and for that, several individuals have come forward. In Samana area of Punjab, 3 childhood friends have started a joint venture to treat paddy straw and make it as an alternative fuel. ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ. There is a saying in Punjabi that we will surely win. Just keep our courage high. It is just the beginning. Just wait for 2 years. You will see the results. Punjab will again be on the top. While the Punjab government and farmers continue to grapple with the issue of stubble burning, a private sector initiative appears to be a promising solution, converting stubble into an alternative fuel with reduced emissions. मुझे बताइए सबसे पहले तो क्या मैकेनिज्म है, कैसे आप पराली को फ्यूल बना रहे हैं और कैसे सरकार की मदद मिल रही है? ये पंजाब सरकार के उपराले से लगने वाला प्रोजेक्ट है. इसमें हमें पंजाब सरकार बहुत मदद कर रही है. हमारे डीसी मैम, हमारे मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा जी, इन्होंने हमें गाइड किया, मोटिवेट किया, तो हमने मूड बनाया इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए. इसमें हमें हर एक महकमे से पूरी मदद मिली है. जो चीज़ चाहिए थी उससे ज़्यादा मिली है, कम नहीं मिला. हमारा बेसिकली पहले काम भट्टों का है. भट्टों पे ये मैंडेटरी हो चुका है भी आपको 20% कोयले का सब्स्टिट्यूट एज ए पैडी स्ट्रॉ पैलेट यूज़ करना पड़ेगा. उसको देखने के लिए हमें ज़रूरत थी इसकी. इस काम की ओर हमने गौर किया और देखा इस काम की ओर जाना ही है, किसी और को क्यों करवाना, आप अपने आप खुद क्यों ना करें. तो हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा. हम तीनों दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं. हमने बैठ के डिस्कस किया, इसके बारे में रिसर्च किया और हमने इसके नतीजे पे निकला भी हम ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे. फिर हमने मशीनें ढूंढी, इन मशीनों के बारे में देखा भी ये हमारा काम पूरा कर देंगी. फिर हमने ये मशीनें का ऑर्डर दिया. मशीनें आ चुकी हैं. विद इन ए वीक हम प्रोडक्शन में आ जाएंगे. हमारे पास पराली इस टाइम पूरे ज़ोर से आनी शुरू हो गई है. 700-750 टन पराली डेली पहुंच रही है, जो नेक्स्ट वीक 2000 टन तक हो जाएगी. 40-45 बेलर्स वाले हैं. एक बेलर्स वाले के पास 50 से 60 आदमी हैं और अलग अलग पार्टीज़ हैं. हमारे पास 45 पार्टीज़ हमारे पास लगी हुई हैं. वो माल हमारे पास पहुंचा रही है 170 रुपये क्विंटल के रेट पे. सरकार की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है? बहुत हेल्प है जी. हमारे लिए भी है, बेलर्स वालों के लिए भी है. जो जिमीदार अपनी पराली की गांठ बनवाएगा, एज ए बेलर से गांठ बनवाएगा, उसके लिए भी बहुत सारी सरकार ने चीज़ें सोच रखी हैं जो आने वाले प्रोजेक्ट में टाइम में पेश की जाएंगी. तो क्या उतना इफेक्टिव है जितना कोल होता है, या पोल्यूशन में क्योंकि उस हिसाब से असर होगा इसका, क्योंकि जलना? सर, जो पोल्यूशन पंजाब का पहले था वो 10% रह जाएगा. पोल्यूशन होगा पर 10% रह जाएगा. The Punjab government is not only depending on these units, but is also offering them as incentive. सरकार दावे करती है कि हमने प्राइवेट कंपनीज़ को बोला है कि जी आप खरीदो पराली लेके जाएंगे. 20% तो उन्हें खरीदनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी. भट्टों को बोला है, भट्टे जो है वो पराली लेंगे आपसे और सरकार खुद भी लेगी, उसके बदले आपको मुआवजा देगी. ऐसा कुछ हो रहा है? देखो सरकार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ. Whatever the government is saying is all up in the air. We say government can take the whole stubble, as at the time of sowing the farmer should be empty and ready for the next crop. ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ Whatever the government is saying that they have made factories etc. Here in Amritsar we have none except burning. We have no option. लोगों की शिकायत ये है कि सरकार कहती तो है कि आपकी पराली कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है. हमारे पास तो कोई आता ही नहीं पराली लेने, तो हमारे पास कोई समय ही नहीं होता. फिर हमें अपनी फसल का भी देखना है, तो जलाने के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं. उसका भी हमने अभी सारा हमारे ध्यान में. हम किसान हैं, हमें सारा मालूम है कैसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब किस चीज़ की ज़रूरत है. क्योंकि अभी है ना जो वो मटर बोने का समय है, तो सबसे पहले हम जो मटर बोएंगे और जो आलू बोएंगे उनको उठाएंगे. उसके बाद जो जिन्होंने कनक बोना है उसका शुरू करेंगे. सो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अभी इनके 22 से 25 बेलर ऑलरेडी इनके चल रहे हैं. इस फैक्ट्री के बेलर हैं वो चल रहे हैं. इन्होंने इस सीज़न में 1 लाख टन है जो वो इकट्ठी करनी है, पराली इकट्ठी करनी है. मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा नहीं तो एक कांसी चौंसी का ये अकेली फैक्ट्री उठाने के सक्षम है. But this initiative does come with its own set of challenges.
Although the government has mandated the use of 20% treated biomass pellets as fuel in brick kilns and the thermal industry, meeting this requirement remains difficult. Kiln owners are willing to switch to paddy straw pellets, even though they are more expensive than traditional fuel options. क्या कुछ है ये प्राइवेट प्लेयर्स कैसे हेल्प करने वाले हैं, क्या कुछ मैनेजमेंट करने वाले हैं और कैसे पराली जो जलने की समस्या है उससे राहत मिलने वाली है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का, जो जब से सरकार बनी है तब से ये बहुत बड़ा इशू हमारा पंजाब का रहा है कि पराली जलाने की वजह से जो प्रदूषण होता था उससे निजात पाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक बहुत अच्छा उपराला किया और लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लगातार इस पे काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा कि हमारे पटियाला डिस्ट्रिक्ट के ये समाना कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पराली से फ्यूल बनेगा। जो ईंटों के भट्ठे होते हैं उसमें इस फ्यूल को जलाने के लिए जो उसका एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिससे 20% उसमें कंपलसरी है कि उसको यूज करना ही करना है हर एक भट्ठे में। तो इनका जो इनको ग्राहक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इससे जहाँ पे पराली की साम संभाल अच्छी तरह से हो जाएगी, उसके साथ ही जो प्रदूषण होता था उससे भी छुटकारा मिलेगा। The opposition is questioning why the ruling Aam Aadmi Party collects money as environment cess but can't spend it on solutions for farmers. I, as a leader of opposition, have been proposing that environment cess Arvind Kejriwal's government has imposed in Delhi. Last year, what I had read from the papers and also in the what I transpired on television was that almost 1,000 crore rupees they collect as environment cess in Delhi. And I don't think so majority of that money is spent. That's lying idle over there. Today we have a government of the AAP both in Punjab and in Delhi. Punjab is from where stubble burning is happening and the polluted air reaches Delhi. So Delhi needs to safeguard itself. So I would propose, number one, the demand of the Punjab farmer has been that every single acre you give when paddy is being you could say procured, you give us 100 rupees per quintal. The total arrivals in Punjab are to the tune of almost 182 lakh metric tons. So it comes to almost 1,800 crore rupees. If Mr. Kejriwal is willing to give us around 900 crore rupees, the rest of the money has to be then 50 on a 50-50 basis. The central government must also chip in. If the central government gives us 900 and Kejriwal gives us 900, I'm sure that none of the Punjab farmers is going to go for this burning of the straw. So that is the only way out. People are learning, a lot of biomass plants are coming in, but it will take us almost 25 to 30 years to utilize 100% of the straw that we burn. Frustrated farmers are also questioning the intent of governments when it comes to their concerns. We have no option. If we delay, insects destroy our fields. We can get rid of it only if the government provides us the machines instead of giving subsidies. Government has no option. तो लाख रुपए तो वैसे ही एक्स्ट्रा लगा दिए उन्होंने। सरकार कोले कोई हल नहीं है, वोटों की राजनीति हो रही है, किसान बहुत दुखी है। The issue of stubble burning is an environmental time bomb that is constantly ticking and is affecting the entire northern India. While claims and counterclaims persist, the solution for this vital problem cannot be ignored, and this needs cooperation of both the government and citizen. With camera person Ravi Ranjan, this is Akash Sharma for CNN News 18.